we have been connected for a very long time. I think जब से from 2023 I think we are connected, and we have आपने guide भी किया है, and we have worked together also in on some projects. क्या So thank you sir. आपके फर्स्ट और फोर मेंस में 100 मार्क्स का जंप हुआ है. लाइक यू हैड 335 मार्क्स इन योर फर्स्ट मेंस एंड इन फोर्थ मेंस यू हैव 435 मार्क्स. Yes sir. लेट्स स्टार्ट विद पेपर वन. पेपर वन में आपका प्रीवियस मेंस में जो स्कोर आया था 74 मार्क्स, उससे आपने 37 मार्क्स का जंप लिया है, विच इज क्वाइट अ ह्यूज जंप, एंड यू हैव स्कोर्ड 111 दिस ईयर. Yes sir. So, पेपर वन के कॉन्टेक्स्ट में अगेन यू हैड आल्सो मेंशन्ड सम वेरी नॉवेल थिंग्स, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका स्कोर बड़ा है. जैसे सोसाइटी वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें आपने सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल की हेल्प ली. सोशियोलॉजिकल स्कॉलर्स, सोशियोलॉजिकल जार्गन्स, टेक्निकल टर्म्स. सेम गोज विद ज्योग्राफी, वहां पर भी आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल की हेल्प ली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये जो सिलसिला आपने जारी रखा कि नॉट जस्ट पेपर वन, अक्रॉस द बोर्ड पेपर 1 2 3 4 में आपने ऑप्शनल वाला बेंट लेकर आया, जहां पर आप स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, टेक्निकल टर्म्स, जार्गन्स, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज यूज आपने की है, जिसकी वजह से आपको लगता है आपका स्कोर बढ़ा है. Yes. सो स्टार्ट विद पेपर वन, दिव्यांग. Yes, sir. So as you mentioned that last year I had a very less score, below average score था वो 74. So I realized कि कुछ जगह तो मेजर इशू हुआ ही होगा. I think GS1 में सर इशू वही आता था कि for example in geography if a question is being is asked, so I did not have much points to write on that thing. क्योंकि ज्योग्राफी एज सच मुझे ऐसा कॉन्सेप्चुअल टाइप का ही लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि साइक्लोन कैसे बनता है आई कैन एक्सप्लेन, बट अगर मुझसे कोई वैसे बोले कि लिख बताओ तो या फिर उसका इम्पैक्ट बताओ तो शायद उतना पॉइंट मैं लिख ना पाऊँ. सो आई नीडेड सम आइडियाज कि कैसे जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे. सो दैट इज व्हाई आई शिफ्टेड टू ज्योग्राफी ऑप्शनल पे मैं सीधे गया. मैंने जो है वो शून्य आईएएस की जो 8 years के जो सॉल्यूशन आते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, आई रेफर टू दैट. आई रेड आंसर्स, तो उससे मुझे आइडिया मिला कि हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ पॉइंट्स, हाउ टू ब्रिंग इन गुड कंटेंट इन योर आंसर. एंड सेलेक्टिवली पढ़ा मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो उसमें क्वेश्चंस आएंगे जो इतने डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी में जनरल स्टडीज में तो नहीं पूछेगा वो. सो यू शुड रीड इट वेरी सेलेक्टिवली. तो मैंने उससे पढ़ के आई वॉज एबल टू मेक नोट्स, और इफ नॉट नोट्स आई हाईलाइटेड इट देयर. एंड बाद में एक बार शायद और देखा होगा. सो दैट एक्चुअली हेल्प मी इन आंसरिंग द ज्योग्राफी पार्ट. और ज्योग्राफी के लिए व्हाट आई डिड अदर देन दिस वाज कि देयर इज अ साइट कॉल्ड डाउन टू अर्थ. तो उसमें जो है वो जो है वो सारे अपडेट्स आते हैं कि कहाँ पे कौन सा डिजास्टर आया है, क्या चेंज हो रहा है, क्या एनवायरमेंटल कैलामिटी आई हुई है, या फिर हाउ द एनवायरमेंट इज डिग्रेडिंग. सो यू विल गेट दीज गुड एग्जांपल्स व्हिच यू कैन राइट इन योर answers. So I did that thing, and I think it might have been rewarded. Apart from that, geography में छोटे छोटे diagrams आपको बनाने चाहिए. Like if a 10 marker question is there in geography, you should be able to make two small diagrams. In a 15 markers, 3 to 4 can be there. So this is how you address a geography based question. In society, I faced the same issue. That I was not. I am a person from a technical background, from BTech from IIT, and I had a technical optional as well, science optional, mathematics. So I was aware about. I only had a rough idea about the society, and it was difficult for me to compete with people who have a humanities background, because even if someone's optional is anthropology or PSIR, they do read about how the society is functioning or how the administration is functioning. So they have a better understanding of that. So इसलिए I refer to sociology optional शून्य IAS solution of past 8 years, and उससे मैंने जो है वो उनके आंसर्स डिटेल्ड पढ़े. उससे काफी पॉइंट्स, काफी आइडियाज जनरेट हुए, एंड आई मेड नोट्स ऑफ इट. आई उससे मैंने जो स्कॉलर्स होते हैं, सोशो के स्कॉलर्स होते हैं, वो मैंने सोशो थिंकर्स होते हैं, वो मैंने वहां से निकाले, एंड आई वाज एबल टू यूज देम इन माय आंसर्स दिस ईयर. और कुछ एग्जांपल भी मिले मुझे, एंड आई यूज दैट इन इंट्रो और इन कंक्लूजन. सो आई वाज एबल टू मेक माय आंसर मोर स्पेसिफिक एंड मोर सोशियो ओरिएंटेड. तो उससे आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन सम एडवांटेज व्हिच आई हैव रिसीव्ड, एंड एज अ रिजल्ट आई वाज एबल टू इंक्रीज माय मार्क्स बाय 37. सो सॉर्ट ऑफ आपने एक्सपर्ट आंसर बनाने की कोशिश की बाय ब्रिंगिंग इन ऑप्शनल वाला नॉलेज इन योर जीएस पेपर्स. Yes, sir. Like multi-dimensional and also experts. Plus, sir,
I think one thing which might have helped me is कि generally what people do is that 10 markers को वो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं. So हम्म उससे क्या होता है कि पेपर जब आप चेक हो रहा है तो वो स्टार्टिंग से चेक हो रहा है. So हम्म if you are like आप 10 markers की क्वालिटी डाउन है ना, तो वो बाद में आपने भले 15 मार्कर्स बड़े अच्छे लिखे हो, हम्म आपका जो है वो आधा मार्क्स भी कम कम होता चला गया. So that is like 10 marks what you could have scored more. हम्म So I think that is one which impacts. तो इसलिए इस बार मैंने ये किया था कि हम्म भले 15 मार्कर्स में आई यूज टू आइडेंटिफाई वन और टू क्वेश्चंस जो मुझे उतने अच्छे से नहीं आते हैं, और हम्म वो टाइम बचा के आई यूज टू कि 10 मार्कर्स में बहुत अच्छे से लिखूं. सो हम्म दैट माइट हैव हेल्प बिकॉज इन 15 मार्कर्स देयर वर टू क्वेश्चंस. वन वाज द जो ऑस्ट्रेलिस पे था, और एक उस पे आया था, और एक क्वेश्चन जो है वो ट्विस्टर्स पे आया था. सो हम्म दैट वाज ऑफ 15 मार्कर्स. तो हम्म उस पे इतना कंटेंट था इवन इफ आई वुड हैव wrote down everything in 15 मार्कर्स, बट अगर 10 मार्कर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए इन विच आई न्यू आई कुड हैव डन बेटर, तो फिर वो नंबर कम ही होते. इसलिए मैंने इंश्योर किया कि 10 मार्कर्स एकदम अच्छे से लिखूं मैं, और हम्म 15 मार्कर्स में उन दोनों में पेज भर दिए थे, बट कंटेंट वाज लेस, ओनली रेलेवेंट कंटेंट वाज रिटन इन दोस क्वेश्चंस, इन हम्म दोस टू क्वेश्चंस. हम्म This is one thing which I did. ओके. So this might have helped, sir. All right. So let's move to paper two. This year you had 114 marks in paper two. And I remember Yes, you sir. telling that you tried again novel strategies in paper two as well. Again, थोड़ा सा expertise लाने की आपने कोशिश की paper two में भी by incorporating scholars, quotes, especially in your conclusions. You used to use scholars to end your answers. उसके अलावा लक्ष्मीकांत के एंड में से आप वैल्यू ड्रॉ करते थे एंड यू यूज्ड टू यूज द दोस थिंग्स इन योर आंसर्स डायरेक्टली. तो प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस. Yes, sir. सो सर GS4 में जो GS2 में जो है वो बेसिकली तीन चार पार्ट हैं. एक तो जो पॉलिटी वाला पॉलिटी स्पेसिफिक पार्ट होता है. सो इन दैट लाइक डिटेल नोट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना GS2 में वन मेजर एडवांटेज इज दैट कि आपके जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन पीवाईक्यू से के बेसिस पे वो रिपीट होते जाएंगे. सो दैट इज व्हाई यू हैव एन एडवांटेज कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्म कर रखा है पहले से या उन टॉपिक को प्रिपेयर किया हुआ है, यू विल गेट एन एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आना ही आना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे एनजीओ पे आना है, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे आना है, या फिर लेट्स से उस पे आना है जो आपका NCST या NCSC पे आ जाएगा, या फिर आपका जो है वो कोई क्वेश्चन लोकल बॉडीज पे आ जाएगा. सो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होंगे ही होंगे. सो इफ यू कैन मेक योर नोट्स इन लाइन विद द PYQs, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो इसलिए मैंने वो किया था कि आई हैव सम डिफरेंशिएटिंग कंटेंट ऑन ईच ऑफ दीज थिंग्स. और उसके लिए जो है वो लक्ष्मीकांत एंड इवन अदर थिंग्स कैन हेल्प. सो लक्ष्मीकांत में ऑब्वियसली व्हाट आई सेड कि जैसे जो हर चैप्टर के पीछे जो है वो किसी एक्सपर्ट की कमेंट लिखी होती है. फॉर एग्जांपल, ग्रैंडविल ऑस्टिन की कमेंट जो है वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप या इंडियन फेडरलिज्म पे आपको मिल जाएगी. या फिर जो है वो लेट्स से किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो उस टाइम पे थे, या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो लोग थे, उन्होंने कुछ कमेंट किया होगा, उनकी कमेंट आपको मिल जाएगी. सो यू कैन यूज दोज कमेंट ऑन फॉर कंक्लूजन. So that is something which you can do. Other than that, what helps in GS2 a lot इसकी आप जो है ना वो टेस्ट सीरीज के जो आंसर्स हैं, यू शुड रीड इट. किसी एक या दो टेस्ट सीरीज के आप मॉडल आंसर उठा लो, एंड फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, then think what you could have written, and then read the answer. So by doing, you will get some very good content, and then you can use it in your answers. So that is one another way which you can, by which you can increase the quality of your answer. So ये चीज है जो आपके काफी नंबर बढ़ते हैं. Apart from that, in GS2 you can obviously come up with some framework as well. For example, in IR, in international relation questions, आप जो है वो एक ही framework में सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. For example, if it is talk if two countries are, if a question is कि इंडिया का अमेरिका या फिर जो है वो चाइना से रिलेशन कैसा है, या फिर let's say any other third country, उससे कैसा रिलेशन है, you can always write your answer from the perspective of economic aspect, trade aspect, investment aspect, and साइंस एंड टेक, डिफेंस, या फिर ऐसे करके आप मल्टीपल 8-10 पॉइंट जो है 8-10 फ्रेमवर्क बना सकते हो, एंड देन यू कैन राइट इट, एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, एंड देन यू कैन राइट सम गुड कंक्लूजन जो किसी एक डिप्लोमेट या किसी एक्सपर्ट ने बोला होगा.
तो दिस इज हाउ यू कैन इंश्योर आपके GS2 में मार्क्स अच्छे हैं. Okay, okay. I also remember you had mentioned about the importance of mentioning important, relevant case studies, best practices, हम्म. committees, and so on for paper two. So, elaborate on this point. Yes. पर इसमें एक्चुअली जो GS2 में यू विल फाइंड कि जो दो सेक्शन है लाइक गवर्नेंस एंड द सोशल जस्टिस पार्ट. सो इन दैट टू उन दोनों चीजों में आप आपके पास स्कोप होता है कि आप जो है वो वे फॉरवर्ड में यू कैन राइट सम गुड केस स्टडीज या गुड एग्जांपल प्रैक्टिसेस व्हिच आर हैपनिंग. तो इसके लिए नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है. अदर देन दैट अगर आपको कंसाइज वे में चाहिए तो शून्य का बहुत अच्छा कंटेंट आता है इस पे. तो शून्य IAS का जो है वो आप डॉक्यूमेंट से जा सकते हो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड सम गुड एग्जांपल्स व्हिच आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. सो दैट माइट गिव यू एन एडवांटेज. Apart from this, sir, committees are important. So you can bring in a lot of committees recommendations with respect to everything, with anything which you know. So that is another thing which you can do. Then constitutional articles, judgments, Supreme Court judgments. So these are something which will act as a value addition in GS2. All right. अगेन पेपर थ्री अभी आपने जैसे बताया एक्सेस पॉइंट्स आप लिखा करते थे मैक्सिमम मैक्सिमम कीवर्ड्स पॉइंट्स के अलावा Yes, यू sir. नीड टू यूज मैक्सिमम रिलेवेंट कीवर्ड्स and you worked especially on the way forward and conclusion aspect of paper 3. So when you say Yes. कि आप वे फॉरवर्ड पर काम कर रहे हो और मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज कर रहे हो सो कुड यू एलैबोरेट ऑन दिस पेपर 3 के कॉन्टेक्स्ट में. Yes. Uh, Sir, like I had very low score in this paper, GS third paper, in my first two mains. ओके. So I had around 54, and then in 2023 it increased to 97, which is a jump of 23 marks. And this year I had 91, so which is a decent score. So one issue which I realized is that I analyzed the copies of toppers, and I realized that people scoring high are getting a very huge number of points. सो इसलिए मैंने इस पेपर के लिए स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि आई विल राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आई कैन व्हिच आर रेलेवेंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो एज आई मेंशन्ड बिफोर कि 10 मार्कर्स के लिए इट वाज कि 15 से 20 पॉइंट्स तक जाना है एंड 3 मार्कर के लिए अराउंड 25 to 30 पॉइंट्स तक जाना है. सो दैट दिस वाज माय स्ट्रेटजी और उसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड सोच रखे थे अक्रॉस ऑल दी 5 सब्जेक्ट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस paper, which is ki there is economy, agriculture, then there is science and tech, disaster management, and environment. So these are the five things, 5 subjects which are there. सो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस में मेंशन्ड है या फिर आप पढ़ते रहते हो इन जनरल. सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ इट एंड आई यूज्ड टू इंश्योर कि इनमें से कोई कीवर्ड मैच हो रहा है सो दैट माय आंसर इज मोर होलिस्टिक डाइवर्सिफाइड एंड व्हेन द पर्सन रीड्स ही फाइंड्स दैट इट इज अ वेरी होलसम आंसर. सो इसलिए मैंने ये ऐसा फ्रेमवर्क बनाया हुआ था ऐसे किया उससे पॉइंट्स भी बढ़े एंड आंसर काफी डाइवर्स हुआ. सो आई वाज एबल टू स्कोर डिसेंट मार्क्स इन दिस पेपर देन. Yeah, and 91 is a good score given the scaling down of marks in the GS3 paper. Uh, Anything about this paper is good. yes, yes. And coming to paper 4 ethics, you have 118 marks this year. Yes, sir. And you had mentioned about trying different things like पॉइंट्स वर्सेस डायग्राम्स. कभी आपने डायग्राम्स यूज किए थे फिर आपने पॉइंट्स भी यूज किए पेपर में. देन यू आल्सो वेंट Hmm. फॉर यूजिंग डिफरेंट स्कॉलर्स फिलोसोफर्स साइटिंग केस स्टडीज में भी आपने जो है सो इनोवेटिव अप्रोच फॉलो करने की कोशिश की थी. आपने फोन पर बताया था कि यूज टू स्टार्ट विद डिफरेंट कोट्स समरी सम रिसेंट इवेंट्स. Hmm. You also used different diagrams in different case studies and Yes, sir. एग्जाम्पल्स ऑफ गीता श्लोकास. कैरेक्टर नेम मतलब अगर केस स्टडी में रमेश इज अ कैरेक्टर तो आप रमेश का नाम बार बार यूज कर रहे हो केस स्टडी में. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस. Yes, sir. Sir, for part A, the theoretical part, उसमें some people have different ways of scoring marks. So मैंने एक अटेम्प्ट मेरे लास्ट अटेम्प्ट में भी 118 थे इस अटेम्प्ट में भी 118 है. लास्ट अटेम्प्ट में पॉइंट्स वर लेस बट जो डायग्राम है वो ज्यादा थे.
सो आई वाज हम्म। मेकिंग मैनी डायग्राम्स। हम्म। इस अटेम्प्ट में मुझे नंबर बढ़ाने थे, तो मैंने जो है वो डायग्राम कम करके पॉइंट्स बढ़ाए, बट हम्म। नंबर नहीं बढ़े, नंबर सेम ही रहे। हम्म। तो दोनों ही तरीके होते हैं। इसलिए जो है वो आई थिंक एक डिसेंट स्कोर करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि डिसेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना दो, एंड हम्म। देन यूज ऑफ फिलोसफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एथिक्स इज अ काइंड ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हम्म। उसमें आपके जो है वो इट्स इम्पोर्टेंट कि जो है वो आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टाइप आने चाहिए, बिकॉज इट इज द ओनली पेपर जिसमें एक ही चीज है, सिर्फ एथिक्स है। हम्म। बाकी सब में जो है वो अलग, बट इसमें जो है वो एक ही चीज है। सो हम्म। वो एक्सपर्ट दिखने के लिए टू बी एबल टू ब्रिंग इन सम फिलोसफर्स एंड बुक्स, या जो भी आपको हम्म। अपना डिफरेंशिएटेड कॉन्सेप्ट लगता है, यू शुड बी एबल टू ब्रिंग इन दैट। हम्म। तो हम्म। वो चीज है। उसके अलावा जो आप कुछ कंटेंट ला सकते हो, जैसे कबीर के दोहे या समथिंग विच यू कैन यूज। सो आई मग्ड अप सम ऑफ द हम्म। दोहास, और नॉट मग्ड, मुझे वैसे भी पता ही होते थे। हम्म। उसके अलावा लाइक समथिंग विच आई हैव रेड, महाभारत इज वन ऑफ माय फेवरेट epic, हम्म। and if you remember, I used to write lot of anecdotes from Mahabharat in यस। essay। यस। तो वो मुझे काफी सही लगता है, तो मैंने उसमें वो भी यूज करता था मैं। I इवन इन द केस prominently, स्टडी I पार्ट आई। prominently, I prominently remember Draupadi Cheer Haran wala episode that you had used multiple times. हाँ। हम्म। तो Yeah. वो मैंने सो महाभारत इज समथिंग विच आई लव, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एपिक एज पर मी। सो Hmm. वो मैंने यूज। Hmm. उसके अलावा I think some of the books which you read, like A Man's Search for Meaning in Life is one book, या फिर और कोई बुक आपको जो अच्छी लगती हो, which is life changing, you can use that book also। तो वैसे करके जो है वो आप अपने कंटेंट को मोर एडवांस बना सकते हो, Hmm. एंड दैट कैन गिव यू एन एज। सो ये एक चीज है। उसके अलावा जैसे थ्योरेटिकल पार्ट में 3 कोड बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें जो है वो कोड लिखा होता है, एंड देन ये टास्क की जो है वो इसका रेलेवेंस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसा है। सो Hmm. फॉर दैट मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे वन ऑफ द वे फॉर इंट्रोडक्शन वाज कि लेट्स से देयर इज अ कोट बाय महात्मा गांधी। सो व्हाट आई विल डू कि वो कोट महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया, आई विल इंश्योर कि मैं 3-4 लाइन उसके बारे में लिख दूं, सो दैट द एग्जामिनर नोज कि दिस पर्सन हैज एन आइडिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में कोट पूछा गया है। एंड Hmm. उसके बाद जो है वो आप कॉन्टेक्स्ट लिखो, अगर उसका कुछ डिनाई कर सकते हो देन यू कैन डिनाई इट फॉर 1 और 2 पॉइंट्स, डिनाई कर दो, एंड देन एक थीसिस या सिंथेसिस करके आप Hmm. जो है वो एक सिमिलर स्टैंड कर सकते हो। सो दिस इज वन वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। उसके अलावा केस स्टडीज में जनरली सबको पता ही होता है कि सही चीज क्या है, बिकॉज वी आर मैच्योर इनफ टू राइट दैट। जो इशू मतलब जो इशू आता है वो ये होगा कि जो बंदा चेक कर रहा है आपका पेपर, ही माइट गेट बोर्ड, बिकॉज केस स्टडीज आर इन जनरल वेरी बोरिंग। तो Hmm. इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कुछ डिफरेंशिएटेड कंटेंट लेके आओ। तो Hmm. हर केस स्टडी का इंट्रोडक्शन आप अलग तरीके से कर सकते हो, कहीं में किसी में एक में कोट से स्टार्ट कर सकते हो, एक में समरी से स्टार्ट कर सकते हो, एक में आप सिमिलर टाइप का रियल लाइफ इवेंट ला सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ब्रिंग इन सम डायग्राम्स, then you can justify whatever action you are taking by help of philosophers or by help of any mythological thing, like कृष्णा ने ऐसा किया था, राम ने ऐसा किया था, Hmm. ऐसे करके आप जस्टिफाई कर सकते हो। So this is how you can make your case studies also interesting, which can give you some edge. So Hmm. this was whole strategy for GS4. Fine, fine, fine. So at the end, Divyank, I would thank you for making out time because presently, still you are at the National Police Academy. Still you are to resign from IPS and join IAS. So your schedule out there is quite hectic. और तुमने उसमें से समय निकाला. So from on the behalf of our students who will be benefiting from this session, I would thank you. Thank you for inviting me.